हेलो एवरीवन। ये पानी और ये मैं उसमें ऐड कर रहा हूं NaCl नमक। तो क्या बना ये? एक बार हमने पानी में नमक डाला और दूसरी बार हमने पानी में डाली मिट्टी। तो क्या बन गया ये कि पानी में नमक, पानी में मिट्टी। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। So let's start the next topic. Then we will come back on to it. So next chapter is class 12, chapter 1, and the name of the chapter is solution. Name of the chapter is solution. कि जब हमने पानी में नमक डाला तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन? कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज मेंट बाय होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस वर्ड? कि होमोजीनियस इज जब हमने पानी में नमक डाला तो वी कैन नॉट सी दी पार्टिकल्स सेपरेटली, बट जब हमने पानी में मिट्टी डाली तो वी कैन सी दी मड पार्टिकल्स वेरी क्लियरली। तो जब दो चीजों को मिक्स करने पे दे बिहेव लाइक अ सिंगल, वी कैन नॉट सी दी salt particles separately, they have mixed thoroughly. So this is a solution and पानी में मिट्टी इसको बोलते हैं सस्पेंशन। तो our chapter is based on, our topic is based on solution. A solution is a homogeneous mixture of, a solution is a homogeneous mixture of two or more components. A solution is a homogeneous mixture of two or more components. Hope you have been clear with the term solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more components. Now, there are some concentration terms. There are some concentration terms based on the solution. Based on the solution, there are some concentration terms. तो उससे पहले कि हमने क्या किया, we took water in glass and added salt particles to it. तो जो ऊपर से ऐड करते हैं that is known as solute, और जिसमें ऐड किया that is known as solvent. And solute plus solvent, solute plus solvent, it becomes solution. Solution is formed of solute plus solvent. And there are some concentration terms. The first and the foremost is known as molarity. Is known as molarity, denoted by capital M, and the formula of molarity is moles of solute divided by volume of solution, and that volume should be in liters. कि moles divided by volume
और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हुई तो इसको लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 एंड that 1000 comes in the form of a numerator. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मास कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास divided by molar mass. तो क्वेश्चन कि कैलकुलेट molarity of 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. फॉर्मूला गिवन है COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O in your to form 200 ml solution. To form 200 ml solution. So what we have to find? Molarity. The formula is moles of solute. कि सबसे पहले जो फाइंड करना है, write its formula. The moles of solute and volume of solution. The moles of solute is COOH whole twice dot 2H2O. Given mass 6.3 ग्राम. और जो solute होता है उसके लिए जनरली लिखा जाता है 2 या B कि W2 is mass of solute and capital M2 is molar mass of solute. So what is the molar mass? कि COOH 12 plus 2 oxygen 32 plus 1. So it becomes 45 and it's whole twice. So that becomes 90 and 2H2O. So H2O 18 into 2 36, that becomes 126 gram. So how many moles? The moles become 6.3 over 126. So यहाँ से डेसिमल हटाया नीचे 10 and it becomes 1 over 2. So 1 by 20, the moles is 0.05. So molarity becomes moles divided by volume, and volume is directly given 200 ml. So it is in ml. So it becomes multiplied by 1000. So this becomes the molarity 0.25 molar. This is how we are going to solve the numericals of this concentration terms. So now we have come to know how to calculate molarity. So now meaning of molarity. What is the meaning of term molarity? So molarity, it gives us कि जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 मोलर सॉल्यूशन, और नहीं तो अभी हमारा आंसर आया था 0.25 मोलर सॉल्यूशन. सो 0.25 सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन मींस कि मोलैरिटी गिव्स अस नंबर ऑफ मोल्स, कि 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि मोल्स per liter. It is the information given by the molarity, the number of moles of solute per liter of solution. So if it is given 3 molar, so 3 moles of solute, 5 molar, 5 moles of solute per liter of solution. So this is all about the molarity. Then
द सेकेंड टर्म इज, तो हम जल्दी से सारी टर्म्स लिख लेते हैं, देन वी विल डू दी क्वेश्चंस। मोलैलिटी स्मॉल एम, मोलैलिटी स्मॉल एम, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर सेम है, नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट शुड बी इन किलोग्राम, की मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर वो ग्राम्स में है तो इनटू 1000। एंड व्हाट मोलैलिटी कन्वेज, इट गिव्स 3 मोलर मीन्स 3 moles of solute per kg of solvent, कि इसमें बस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट गिव्स per kg of solvent। So the third term is mole fraction, mole fraction denoted by symbol X, or it is also known as chi। तो mole fraction is moles divided by total moles। Mole fraction of solute is equal to moles of solute, तो solute के लिए 2 N2 and solvent के लिए 1, तो N2 over N1 plus N2, and mole fraction of solvent is equal to moles of solvent divided by total moles, और ये जो मोल फ्रैक्शन होती है इसका जो टोटल है दैट इज ऑलवेज मैक्सिमम 1, कि मोल फ्रैक्शन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन की जो हम ऊपर से डालते हैं उसके मोल्स एंड डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द वाटर ओनली, दैट गिव्स मोलैलिटी, और दोनों के मोल्स दैट गिव्स मोल फ्रैक्शन। So molarity, molality, mole fraction. And similarly, there are 2 more terms, ppm. ppm is parts per million, parts per million। ppm मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे हम परसेंटेज फाइंड करते हैं, परसेंटेज फाइंड करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100, वैसे पार्ट्स पर मिलियन फाइंड करने के लिए इंटू 10 की पावर 6 1 मिलियन। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 एंड ppb parts per billion, so that becomes mass of solute over mass of solution into 10 की पावर 6 की जगह 9, तो ppm ppb। और इनके साथ कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं कि 20% बाय मास और वेट बाय वेट सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर द न्यूमेरिकल्स, 20% बाय मास और वेट बाय वेट, 20% बाय वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम एंड 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो 20% वेट बाय वेट मीन्स कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कि जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट लेटर होगा दैट इज द यूनिट ऑफ सॉल्यूट, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन
परसेंटेज टोटल होती है 100 में से, कि अगर पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट है, कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूट दूसरा सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूट दूसरा सॉल्यूशन की यूनिट, कि 20% वेट बाय वॉल्यूम मीन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml solution. 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml solution, or volume by volume. So you can write yourself now 20 ml of solute in 100 ml of solution. Very good. So this are the concentration terms, and now we are doing numericals based on them. So this is the first NCERT example. Calculate mole fraction of ethylene glycol. Formula given है in 20% solution by mass. तो फॉर्मूले याद होंगे आपको। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड दैट शुड बी इन लीटर्स। मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, and mole fraction of solute, moles of solute divided by total moles. So here we have to find, in question we have to find the mole fraction of solute. So 20% solution of C2H6O2 ethylene glycol by mass. 20% solution by mass means 20 gram of solute in 100 gram solution. 20 gram of solute in 100 gram solution. पूरा जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का है और उसमें सॉल्यूट 20 ग्राम है। तो देखो एक स्टेटमेंट से, सिर्फ एक स्टेटमेंट से क्या क्या आ गया हमारे पास कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास आ गया। 100 ग्राम सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास आ गया। और सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट। तो एक टर्म से हमारे पास सबके मास आ गए, बस एक टर्म दी क्वेश्चन में। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ C2H6O2, C2H6O2 12 into 2 24, 1 into 6 6 plus 16 into 2 32, so that becomes 62 gram. And moles of solvent, कि अगर पूरी केमिस्ट्री में सॉल्वेंट कुछ ना गिवन हो तो बस द सॉल्वेंट बिकम्स द वाटर। H2O is the solvent, molar mass 18 gram, so it comes near about
62 into 3, 186. So 0.314, so 0.32, and it comes out to be 40 by 9, so 4 point, again 4. So mole fraction of solute is equal to 0.32 divided by 0.32 plus 4.4. So 0.32 divided by 4.72. So 32 by 472. That is the mole fraction of the ethylene glycol. So in this way we have to solve the numericals. पहले जो find करना है write the formula, and then बस वैसे ही दिमाग चलाओ कि what we have to use in the formula. Make the notes, take the screenshot, and then we will do one more question. Now this is the second in-text question of NCERT 5. Calculate small m molality, molarity, and mole fraction. And again, if density of 20% Ki by mass, if the density is given 20% Ki by mass means 20 gram Ki in 100 gram solution. Again, we will get solute and solution and solvent. Okay, solute 20 gram Ki, so 20 gram solution complete 100 gram. And solvent, again 100 minus 20 is 80, and solvent is water, and solute is Ki. K potassium, I iodine, potassium iodide. So first we have to find molality. So moles of solute by mass of solvent. So first we will find moles of solute. The moles given mass by molar mass. So K is 39, I is 127, it becomes 166. So molality, small m, moles of solute by mass of solvent. और अगर ये ग्राम में है तो इंटू 1000, तो मोल्स 20 by 166 and by mass of solvent 80 और इंटू 1000. फिर इस 80 के नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो इट विल कम इन रेसिप्रोकल, इट विल बिकम 20 by 166 इंटू 1000 इंटू 1 by 80. This becomes the molality. अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे 80. So after molality, moles of solute by volume of solution. तो moles of solute, तो same 20 by 166, and volume of solution, और हमारे पास solution का मास है, इसलिए क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है. We have to find the volume of solution, and volume is equal to mass over the volume of solution, the mass of solution divided by density. So 20 over 166
divided by 100 over 1.202 into 1000. That becomes 20 over 166 into 1.202 by 100 into 1000. So that becomes the molarity. ये दो जीरो यहां से कैंसिल हो गई. Then we have to solve it further. As 1.202 को हम रफ में we can take as 1.2 and this becomes 10 by 83. So 10 over 83 और यहाँ से भी एक 10 बच गया तो into 10. So 10 into 1.2 12, 12 into 10 120, 120 over 83 and it will come approx 1.37, 370, 1.4 near about, approx 1.4 molar. So molarity, and the third we have to find the mole fraction, and it is same like the last question. The mole fraction, moles of solute divided by moles of solvent. Solvent is 80 over 18. Again, the moles of solvent is 4.4 and moles of solute we already have. So that will give us the mole fraction. So these are the concentration terms. And now these terms were used in the further chapter in the new formulae of the class 12 solution. So this is all about today's class. Thank you so much. Please share, like, subscribe my videos, my channel in your WhatsApp group also. Thank you.